मैंने आज सोचा कि मैं इसको पूरा ऑन कर लूं, देख लूं लाइव हो गया है, उसके बाद ही आगे जाऊं। Good evening everybody, this is Dr. Vani and I welcome you to India's truly most trusted and most loved bio channel, the one and only Vedantu BioTonic. I hope आप सब एकदम अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं, हैप्पी हैं and you're looking forward to the NCERT underlying body fluids and circulation. We will try and cover this particular topic in the next 2 classes. Like all topics that we do, this topic also shall be followed by a small quiz. Would that be fine, everybody? Yes, early OP, ma'am. What is early OP? Okay, good evening. Chaliye, let's quickly get started and I hope you have your NCERTs out. Now, before I move forward, you must know 2 things. So, what are the 2 things that you must know? Thing number 1. Number 1, you must know that once you do the NCERT of this particular chapter, please go and solve my book as a MCQ book. Is that clear? Both for class 11th and both for class 12th. Once you finish this chapter reading, understanding from this present class which I am taking, go and read the NCERT which I have for you as a test. Is that clear? Done? Would you do that, everybody? Yes, got your, oh lovely. Give it as a test and then tag me in a story or tag me and let me know how much you've scored. Because that book is made out of NCERT, out of lines and diagrams of NCERT, all the concepts of NCERT, you will understand that at what level is your NCERT prepared. That's so important for you to do. Chaliye, let us now move forward and let us do this also, guys. On public demand, like massive public demand, all my batches are full and still students are registering. Aapka crash course, 1 more date has been extended and so have your class 11th, 12th term 2 crash courses. So please EdFest का फायदा लीजिए. Everything is on a 50% off. आगे बढ़ते हैं, but आगे बढ़ने से पहले एक बार EdFest के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. Get in touch with me on Telegram, on Quora Space. Get in touch with me on the comment section. Get in touch with me on Instagram. Class के बाद I will do locomotion and movement, which is for NEET 2023. And in the evening we are not going to do microbes. Microbes are going to start from Monday, but we are going to do human health and disease के CBSE sample papers. Is that fine, everybody? So make sure that you're liking, sharing, subscribing, hitting the bell icon. Perfect. Everybody's hit the bell icon. Perfect. And guys, don't forget to also sit on the test for NEET Eklavya, which is like a flagship program, the best program, the most prestigious program for NEET 2022. 30th January को आपका टेस्ट है. फ्री एडमिशंस पर टेस्ट तो तब क्लियर होगा बिकॉज इसकी मैक्सिमम, आपको पता है जिन बच्चों ने 3rd जनवरी का क्रैश कोर्स किया था वो लास्ट एकलव्य के पार्ट बन चुके हैं. तो क्रैश कोर्स के थ्रू जाना आसान है बच्चों, उसके टेस्ट, बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छा करना है, राइट? सो इसके लिए भी रजिस्टर कर लीजिए. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, which is regarding the NEET 2022 crash course. The new batch started from 24th, 30th को I am launching 1 more batch क्योंकि 24th वाला बैच फुल हो चुका है, एब्सोल्युटली फुल हो चुका है. तो मुझे 30th को एक नया बैच लॉन्च करना पड़ रहा है. करेक्ट. 1200 सिलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर गाइस. 3 चीजों पे फोकस कर लो. छोड़ो, अच्छा भूल जाओ कि क्रैश कोर्स चल रहा है, फॉरगेट इट. आप अपने आप अगर इन 3 चीजों पे फोकस कर सकते हो तो करो. सबसे पहला सिलेबस कंप्लीशन. अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है then it becomes utterly impossible to crack this exam. तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस कंप्लीशन. दूसरा है सारे कॉन्सेप्ट्स की बहुत थरो अंडरस्टैंडिंग. कोई भी चीज रट्टा नहीं मारनी, समझनी है, टीचर से समझनी है. और जैसे ही किसी कॉन्सेप्ट के डाउट्स आते हैं उनको सॉल्व करना है. हर एक चीज के नोट्स होने चाहिए आप लोगों के पास. और इसके इन 4 चीजों के बाद आपको देने हैं कम से कम 30 टेस्ट और इन टेस्ट का डिस्कशन करना है. अगर ये सारी चीजें कर रहे हो तो रैंक आएगी. अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिस है तो प्लीज इस
क्रैश कोर्स के बारे में सोचो, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ 8,000 वर्सेस 80 lakhs बिटवीन 1 year रिपीटिंग। तो प्लीज इस चीज को मिस मत करो। एंड अगर यहां आना है तो बाद में मत लेना, एडफेस्ट का फायदा ले लो। वीडी नीट कोड है एंड यू गेट अ ऑफ। 20,000 से होकर 20,000 से होकर जस्ट 8,000 हो जाएगा विद द कोड वीडी नीट अलॉन्ग विद वानी मैम्स क्लासेस। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है? चले ओके, चलो फटाफट से एनसीईआरटी ओपन कर लो। ये आपको पता ही है, यहां पर एक बार दिखा देती हूँ, ये आपकी क्लास चल रही है। सो जस्ट गो बिलो योर क्लास, राइट? एक सेकेंड, आ जाइए। ये दिख रहा है क्रैश कोर्स, क्लिक कर लीजिए और बाय ऑन कर लीजिए। टेस्ट क्लासेस एवरीथिंग एंड अप्लाई द कोड वीडी नीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आ जाओ, फुल स्क्रीन कर ले लीजिए, आ जाइए। ओके, so now you will have to give this as a test in your home. You'll have to go back, give it as a test, right? No worries, Shweta. I wish so too, poet. But don't worry, बायो तो मैं यहाँ करा रही हूँ। अगर नहीं ले सकते तो फिजिक्स केमिस्ट्री अपने आप कहीं से कर लो, ठीक है? चलो, तो ओपन कर ली अपनी बुक। चलो, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कराया था, मैं आपको एक्सक्रीटरी, कि आपको सबके वेरियस फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ है। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, सर्कुलेट वाटर, इसको कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। याद करो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यूज आते हैं। सर्कुलेट वाटर, इसको कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये बॉडी कैविटीज से करते हैं और सेल्स जो है वो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे जैसे पर्सन्स कॉम्प्लेक्स होते रहे, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी स्पेसिफिक चीज की जरूरत पड़ी। सबसे ज्यादा जो चीज होती है जो ट्रांसपोर्ट करती है वो होता है ब्लड, जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, राइट? एक और बॉडी फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, बट नॉट एज कॉमन एज ब्लड, राइट एवरीबडी? हाय विशाल सिंह, अलीशा जी, अर्चिता जी। इट इज द लिम्फेटिक सिस्टम विच इज नथिंग बट द प्लाज्मा विच इज कम आउट फ्रॉम द स्पेसेस in the blood vessel. Plasma, can anybody define plasma for me? Isram, tell me the definition of plasma. चलो क्विज लेती हूँ। इसराम, सना, प्लाज्मा का मुझे इक्वेशन बताओ। व्हाट इज प्लाज्मा? त्याशा, व्हाट इज प्लाज्मा? इक्वेशन बताओ। श्वेता, मेरे बुक पे मैंने इक्वेशन पे इक्वेशन ओके। चैतन्य, व्हाट इज द इक्वेशन? ब्लड माइनस सेल्स। गुड दिव्या, टेल मी द इक्वेशन फॉर सीरम। Blood minus cells is equal to plasma. That is the equation. Tell me the equation for serum. Tell me the equation for serum, Yash. Blood minus cells. Varsha, Mehek, Purnardeep, wish you a very happy birthday. Good to see you in my class. Plasma minus clotting factors. Mehek, Rafiq, I am proud of you. So let me write down these two equations for everybody before I move forward. Blood minus cells is equal to plasma. Plasma minus clotting factors is equal to serum. So I have two questions for you which can be NEET 2022 questions depending on this. I have two questions. Which out of the following, which is the one which is the maximum in antibodies? AB, अगर ये options है blood माइनस सेल्स, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, सीरम क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा वगैरह, ब्लड हो गया, विच इज द वन विच इज रिचेस्ट इन एंटीबॉडीज? कम ऑन एमिली, गुड। रिचेस्ट इन एंटीबॉडीज, सीरम, नॉट प्लाज्मा, सीरम is rich in antibodies. That is why in COVID also they used to do antibody transfer. Out of the following, blood, cell, plasma, clotting factor, serum, which is the one which maintains the volume of blood? Which is the one which maintains the volume of blood? Let us see how many of you have actually done it. Everybody has done this chapter. Let me ask you a question. Which of ऐसे question बनाए मैंने ढूंढ के? Which is the one which maintains the volume of blood? Plasma. Why? What is present in plasma which maintains the osmolarity of blood? What is it?
It contains clotting factors. What else? That is for clotting. It contains albumin, plasma protein. Write it down. It contains albumin. Yes? Albumin. Understood? Divya ne likh diya. Now one more question. Which of the following blood plasma clotting factor serum is responsible for immunity? Albumin maintains osmotic balance. Which of the following is responsible for immunity? Chalo, बताओ, ये तो actual class type लग रहा है. Question खड़े teacher खड़े होकर question पूछ रही है. Globulin, which is also a plasma protein. Done? Well done. Well done. One last question can I ask you? Last question. Total number of clotting factors. Last question. Total number of clotting factors. How many? 1, 15, 20, 13, 14. How much? 13, Paulami. There are a total of 13 clotting factors. Have you written all these points in your copies? All these points, have you written them down in your copies? Sure? Done? Can we move forward? Yes? Perfect. And just a small request, guys. I am feeling very conscious and very shy to tell this to you. But my throat is fine, but I have fever. It's not COVID, but I think it is viral because the weather is, in the mornings it is getting better, but nights are getting more and more colder. So I think I have viral, so I'm feeling very tired. So that's the reason I cancelled 9 p.m. class, and now also while standing I wanted to sit down and take a class. I'm feeling very tired, like super exhausted wala tired. So I might just end the class a little early. Yes, it's due to, mornings the temperature is reaching 19, 20 also, but evenings it is still 4 degree, 5 degree. So I don't know. Yes, so I was thinking I'll take it on the small screen, but I thought no, let me take it on the big screen only. So I might take it a little early. I will let you know. Okay? No guys. So this is very important. These equations, have you copied everything down, guys? Whatever I was telling you, have you copied it down? Yes? Whatever, everything you've copied down, perfect. Blood आपको पता चल गया, transport पता चल गया. Lymph also helps in transport of certain substances. For example, WBCs. For example, proteins. For example, fats, lacteals. We'll talk about that. Blood is a special connective tissue because it is a fluid connective tissue. So it's a fluid matrix, plasma and formed elements. What are the formed elements of the blood? There are cells. The cells are RBCs, WBCs and platelets. There is a very big cell. That very big cell was called a megakaryocyte. That megakaryocyte got broken down into smaller fragments called platelets. There is RBC. When the RBC is getting formed in the bone marrow, it has nucleus. Later on, it does not have nucleus. Right? So all of these things, let us do it in a lot of detail. Let us start with plasma. Write down things in your NCERT, or if you're making a copy along with your NCERT, write it down after the chapter is over, revise it, go through your notes, do your previous year questions, and then Vani ma'am's book, just give it as a test and score you tell me. Okay, so plasma, the color of the plasma is very important. It is straw colored. भूसे के रंग का होता है. What is viscous? Viscous is anything which doesn't flow that much. Ghee is viscous. Anything which doesn't flow is viscous. It is 55%. That means 45% is obviously cells. 90 to 92% of plasma is water, and the proteins which are referred to as plasma proteins. There are two types of plasma proteins. One of them is called albumin. The other is called as globulin. These are two types of plasma proteins. Make 6 to 8% of it. Is that clear? Albumin, globulin. Apart from that, these are major proteins, but apart from that, there is one more protein which is referred to as fibrinogen. ये वही fibrinogen है
जो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है और फिब्रिन बना कर देता है, क्लॉट बना देता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन। तो 3 है, राइट। ये जो ग्लोबुलिन है इनका पूरा नाम होता है गामा ग्लोबुलिन, लिख लीजिए। और एक गामा ग्लोबुलिन बनाते हैं एंटीबॉडीज जिन्हें आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर? और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये जो एल्ब्यूमिन है ये आपकी बॉडी का वाटर बैलेंस का मेंटेन करता है। दैट मींस अगर एल्ब्यूमिन ज्यादा है तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर एल्ब्यूमिन कम है तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो ये आपके मेजर प्रोटीन्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिब्रिनोजेंस क्लॉटिंग के लिए चाहिए होते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए चाहिए होते हैं। ग्लोबुलिन्स जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी करते हैं, बॉडी का ध्यान रखते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस होते हैं। प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल भी होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स भी होते हैं। दे ऑलवेज ट्रांजिट, मतलब मूव करते रहते हैं बॉडी में। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन होते हैं। कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया, 13। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर मैंने आपको बताया सीरम, सीरम के अंदर होंगी एंटीबॉडीज। इसीलिए आपने कोविड में देखा होगा प्लाज्मा ट्रांसफर जो होता है उसमें सीरम देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? ब्लड। तो इसमें क्या होते हैं? 3 है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। आरबीसी का रेड कलर होता है बिकॉज उनमें एरिथ्रिन कलर होता है तो उनको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ल्यूको का मतलब व्हाइट होता है तो उनको साइट का मतलब सेल होता है, सो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। एंड मेगाकैरियोसाइट्स आर द प्लेटलेट्स और कॉल्ड collectively called formed elements and they constitute 45%. RBCs, where are the RBCs formed in infants? Tell me in the comment section. Okay, where are the RBCs formed when the child is in the mother's womb? Fetus के अंदर RBC कहाँ produce होता है? When the child is in the mother's womb, where is the RBC? Where does erythropoiesis happen? Tell me. I'm sorry, I'm taking support of the stand. I'm feeling very uncomfortable while standing. Tell me, spleen, okay, no. What else? In the fetus. Bone marrow, okay. See, when it's a very small fetus, it starts with yolk sac. What does it start with? Write it down. When it's a very small fetus, it starts with yolk sac. Yolk sac turns to liver and bone marrow. In fact, when the child is born, this is a very important MCQ question. I've also covered it in my book, liver and yolk sac. You must remember this. In fact, when the child is born, at that time also liver does. When the child is born, this is a fetus I'm talking about. Is that clear? Erythropoiesis. Now, in newborn, in infants, it is all bones. All the bones. Remember? All the bones. Is that clear? A to Z, all the bones will do it. Are you getting my point? Feeling very tired. I hope it's not COVID, yeah. Because the kind of exhaustion I'm feeling, it's actually looking like COVID. But I don't have any other symptom. Very slight fever. Don't have any other symptom. No worry, I'll take for 10-15 more minutes. I don't want to cancel classes like this. You're right. So it is all bones. I remember last year I was so unwell. You remember? I don't know. You must not be there. I sat down in the class. अब तो मुझे लग रहा है मुझे चक्कर ना आ जाए, कल वायरल वीडियो ना बन जाए वानी मैम क्लास में बेहोश। यस, और कोई वायरल वीडियो बना दे बच्चे। देखो कैसे टीचर है। Yes, okay, done. Okay. तो और उसके बाद जब adults होते हैं, adults it is only end of long bones. याद आ रहा है? याद रहेगा? It's only the ends of long bones. So fetus के अंदर कहाँ होता है बताइए? Yes, thanks Shweta Isram. I will end the class early. No worries. Fetus के अंदर होता है yolk sac, liver, bone marrow. Done. Infants के अंदर all bone, adult के अंदर ends of long bones. And remember the adult kidney makes something which is referred to as erythropoietin, which is produced by the adult kidney, which causes erythropoiesis. It's a hormone which is produced by the kidney, right? So yolk sac, liver and bone marrow, it is in fetus. All bones, it is in infants. Adults, it is only ends of long bones. Remember this. It's erythropoiesis. A healthy adult man has on average 5 to 5.5 million. Adult females have 4.5 to 5 million. Because testosterone helps in production of RBCs, males always have more. Is that clear? I will do that. साइट ब्लास्ट, आई विल डू दैट. ऑस्टियोक्लास्ट वो होता है जो खाता है. साइट इमेच्योर सेल्स होते हैं. किसी ने पूछा साइट, कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट, इमेच्योर सेल्स बेसिकली.
ब्लास्ट आर द वंस व्हिच आर प्रोड्यूसिंग, जो काम कर रहे हैं. क्लास्ट जो खा लेते हैं, राइट, जो बोन को खा लेंगे, रिजॉर्प्शन करेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट. क्लास्ट इज खाने वाले, बनाने वाले ब्लास्ट, और सेल साइट. ठीक है, थैंक्स त्यासा. आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता. इज इट ऑलवेज नॉट देयर और इज इट नॉट देयर इन मेच्योर आरबीसीज? इट इज देयर बट इट इज नॉट देयर इन इमेच्योर आरबीसीज में होता है, मेच्योर आरबीसीज में नहीं होता. इज दैट क्लियर? तो आरबीसी जब यंग होते हैं तो उसमें नहीं होता. वंस इट कम्स आउट ऑफ द बोन मैरो इट बिकम्स मेच्योर, इट इज नॉट देयर. राइट एवरीबॉडी. हीमोग्लोबिन इनके अंदर होता है which gives it the red color. हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन. इट इज अ conjugated protein. What kind of a protein is it? Tell me. It is a conjugated protein. What do you mean by conjugated protein? It is formed by union of two things. Heme, which is nothing but iron, globin, which is nothing but protein. So iron and protein is going to form hemoglobin. Is that clear? Understood? It's a conjugated protein. It is a protein which is made by two things, heme and globin. Right? Heme is iron and globin is a protein. It's a special protein which has got iron moiety involved to it. And the iron is the one which absorbs oxygen. One hemoglobin molecule can carry 4 oxygen. Is that clear? 12 to 16 grams होता है healthy adult में. ये ट्रांसपोर्ट करवाते हैं. लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज होता है 120 डेज. बिकॉज आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता, दे कैन नॉट डिवाइड. बिकॉज आरबीसीज के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, दे कैन नॉट डू एरोबिक रेस्पिरेशन. क्यों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इनके पास? क्योंकि बाइकॉन्केव शेप के बन गए. सो इनका सेंटर पिचक गया एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे डोंट हैव ऑर्गेनेलीज. आर यू ट्राइंग टू फॉलो मी एवरीबॉडी? यस, आर यू ट्राइंग टू फॉलो? ओके, आर यू ट्राइंग टू फॉलो मी? राइट. अरे यार ऐसे मत करो प्लीज. इस सेंटर से पिचक गए तो there is no center, there is no nucleus, there is no mitochondria. It became biconcave shape. Why did it become biconcave shape? So that it can absorb maximum amounts of oxygen. It can carry things. Right everybody? Guys, I don't think so. इसको बहुत प्यार से बढ़ाना है. I don't think so. I will be able to continue. I'm feeling very tired. So we'll take a test tomorrow. NTA वाला टेस्ट आ रहा है, प्लीज उसे मिस मत करिएगा. Can we continue with this on Monday please? पक्का? Are you sure? Yes? I'm feeling very exhausted. I don't know why, but I'm tired. Like my legs below my knees are like very tired. Yes? Sure? I'm feeling terrible about it, guys. I'm like totally feeling very bad about it. इतना कुछ किया, but we couldn't take the class. I think I really need to just go off to 2 hours sleep and maybe take a paracetamol and sleep off. Yes? Take care and thank you so much for so much love, guys. It really means a lot to me, but I feel very, very exhausted. Thank you and God bless you. Thank you, my dear children. God bless you and I'll see you tomorrow. Maybe let's see if I can take a 7 p.m. class. Otherwise, I will come and tell them that I'm not feeling well, and otherwise I'll take a class. Yes, I think होना चाहिए. I should just sleep for 1 hour and I'll be fine. Otherwise, I'll let you know. Yes. Bye. See you then tomorrow for the test at 5 p.m. Bye, guys. Bye. Bye, guys. Thank you. Take care. Bye.